Hey guys, welcome back to Revelation by Study. I hope you all are good. So आज हमें रीड्स विषय रे पढ़िबा. टोटल कहले आज रीड्स रो ऑपरेशन आज हमें कर दवा. फंडामेंटल रेमेडीज जहाँ को हमें कुए. से जो बहुत सारा लोगों डाउट थाए कि जो 5 टाइप्स रो रीड्स अछि कोटा केतेबेले इशू हुए से सब को हमें वीडियो रे देखिबा. वीडियो टू फास्ट टू लास्ट जाय देखंतु. यू विल गेट ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट रीड्स एंड एटा सब जाको आपन को जतक एग्जामिनेशन अछि यूपीएससी हे गला ओपीएससी हे गला एसएससी क्षेत्र जो क्वेश्चन आसे रीड्स रे आपण मानकर जेमी देले भी ठीक हो जदी ए वीडियो टिक आपण देखुछंदी. सो लेट्स स्टार्ट. जदी आपण कहबे कोन रीड्स हमरो एक्चुअली आर्टिकल 32 एंड 226 वेरी इंपोर्टेंट. फर्स्ट रा एटा शॉर्ट क्वेश्चन एसएससी रे बहुत थर पकाय कि आर्टिकल रीड इशू हेबरे. आर्टिकल 32 हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट इशू करि परिबो. आर्टिकल 226 हिसाब रे हाई कोर्ट इशू करि परिबो आपनकर रीड्स. So right to constitutional rights by remedies जहाँ को मध्य हमें कोई remedies. Then fundamental of all fundamental rights. What do you mean by fundamental of all fundamental rights? हमको fundamental rights given अच्छी. But से fundamental rights fundamental बोली हमें चेक केमती करियो ना आर्टिकल 32 हिसाब रे हमें जो रिट इशू करिवा देन हम जानिबा कि हमर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन हेले हमें का पाकू जे सुप्रीम कोर्ट पाकू जाई परिया. तो रीड इटसेल्फ गोटे हला हमर कोन फंडामेंटल राइट. तो सेति पई याकू कोन को जे फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एंड आकू मध्य आर्टिकल 32 को हमें कोन को जे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. आंबेडकर कौन कहते ना हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32. सो आर्टिकल 32 रे हमें कौन कर परिया सुप्रीम कोर्ट पाकू जाय परिया बट आर्टिकल 226 हिसाब रे हाई कोर्ट पाकू जाय परिया. सो एथिरे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हमरो आसे कोन कि सुप्रीम कोर्ट रो अधिका पावर अछि ना हाई कोर्ट रो अधिका पावर अछि रीड्स इशू को नहीं. सो एथिरे आपण मन रखिबे हाई कोर्ट हैज मोर पावर देन सुप्रीम कोर्ट. कोन पई एक क्वेश्चन आछो कि कोन पई सुप्रीम कोर्ट रो लेस पावर केमि दिला काहे ना सुप्रीम कोर्ट केतेबेले करि परिबो बा सुप्रीम कोर्ट केतेबेले इशू करि परिबो जेतेबेले गोटे एक्सीडेंट हो जो बा जो कोनोसी इंसिडेंट हो सेटा आपन कोन हेतियो ना तार टेरिटोरियल भितरे आसुतिबो तार टेरिटोरी भितरे आसुतिबो. किंतु हाई कोर्ट कोन करि परिबो जदि टेरिटोरी भितरे भी न आसुची आउटसाइड इट्स बाउंड्री हाई कोर्ट सेटा को इशू करि परिबो. बट कंडीशन मन रखिए सब बेले कंडीशन हला कोन ना आपनकर से जो क्राइम हो बा जे कोनोसी रिट आपण इशू करछन माने आपनकर फंडामेंटल रो वायलेशन हो सेटा आपनकर देश भितर हेतिबा दरकार. सेति पई हमें कोन कहि परिबा हाई कोर्ट रो अधिका पावर अछि कंपैरेटिव टू सुप्रीम कोर्ट. सो जदि हमें फंडामेंटल राइट्स बा रेमेडीज विषय रे कहया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स हमें आर्टिकल 32 हिसाब रे कोन करि परिबा इशू करि परिबा. गोटे हला फर्स्ट हला हमर को हेबियस कॉर्पस देन मैंडामस देन प्रोहिबिशन देन सर्चियोरारी देन क्वो वारंटो. हमें ए जो पांचटा रीड्स अछि आपको डिटेल्स रे पूरा डिस्कशन करिवा एंड वी विल हैव ए डिटेल नॉलेज अबाउट ऑल दिस 5 टाइप्स ऑफ रीड्स कि हमें कोटा केतेबेले इशू करे काना शॉर्ट क्वेश्चन रे एटा ही आसे कि हेबियस कॉर्पस केबे इशू करा जाय. ओके तो ए वाला क्वेश्चन को हमें देखिवा. सो हेबियस कॉर्पस कहले कोन को बुझियो जनरली हेबियस कॉर्पस जोटा अछि एटा डील करे का सहित इल्लीगल डिटेंशन सहित डील करे. इल्लीगल डिटेंशन माने कोन सपोज किडनैपिंग. ओके किडनैपिंग माने कोन आपण जाउजंते आपण के जने उठे नै पड़ला किडनैप करी नै पड़ला तो सेही जिंस जदी कहा द्वारा हबो पुलिस आपण को सपोज नेकी पळला इल्लीगल डिटेंशन करिगला एंड कहा को जणै भी नाही कि कोडी मेंशन करनी कि आपण को से डिटेंशन करी कि नेकी जाईछि बोली तो सेते बेले आपनकर फंडामेंटल राइट रो वायलेशन हैला. तो फंडामेंटल राइट जतले आपनकर वायलेशन हला काइना आर्टिकल 21 हिसाब रे कोन कहउछि हमरो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहउछि. तो हमर एटी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोड रहला जदि आपन के किडनैप करि नै पड़ेला तो फंडामेंटल राइट रो हेटी कोन हला वायलेशन हला. आपन कोन करिवे सेतले ना हेबियस कॉर्पस आपन जो रीट अछि से रीट को इशू करि परिवे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 हिसाब रे हाई कोर्ट रे जाके आपन इशू करि परिवे. सो एटी कोन कहउछि राइट to life can be snatched by the procedure established by the law not illegally. That means if you are a criminal that means तमे किसी क्राइम को कमिट करछो देन ऑब्वियसली तुमको डिटेंशन रे निया जिवो बट जो डिटेंशन रे निया जिवो सेटा कोन
लीगली हेतियो दरकार लॉफुल हेतियो दरकार दैट मींस कोन यू हैव अ रिकॉर्ड आपन को जणा जाइथियो कि आपन कोन पई कोन करा होची आपन को डिटेंशन करा होची एमि नै कि इलीगली आपन को कोडी उठे कि नै कि रखि देबे एंड लोक मान को जणेबे भी नहीं आपन को फैमिली को फ्रेंड को जणेबे नहीं तो फर्स्ट लागो राइट टू लाइफ जोड़ा कि हमर आर्टिकल 21 रे अछि राइट टू लाइफ एटा भी गोटे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट कैन बी स्नैच्ड बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ नॉट इलीगली एंड मींस टू हैव ए बॉडी दैट मींस जदी आपनको इलीगल डिटेंशन होजी हेबियस कॉर्पस माने लागो वी हैव ए बॉडी मन रखिए शॉर्ट क्वेश्चन लागो वी हैव ए बॉडी वी हैव ए बॉडी दैट मींस जदी आपनको इलीगल डिटेंशन होजी देन यू कैन इशू दिस writs. Then next, locus standi is not applicable here. Locus standi is not applied here. एटा गोटे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड मध्य पॉलिटी रे आपण को जानंतु locus standi माने कोन सपोज आपण को के जने डिटेंशन कर देछि सपोज पुलिस हो किबा कोनोसी पब्लिक बा प्राइवेट इंडिविजुअल्स लिखाइ छि इट इज अप्लाइड फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडिविजुअल्स तो आपण को केही प्राइवेट लोक भी आपण को कोन डिटेंशन करि पारे तो जदि सी आपन को किडनैप कर रखी छी देन आपन कोन करि परिबेनी निजे आसी की तो कहि परिबेनी कि निजे आसी की रिट इशू करि परिबेनी तो सेति पे आपनकर जे नोन पर्सन थिबो रिलेटिव्स थिबे से माने कोन करि परिबे ए जो रिट अछि ए रिट टाको इशू करि परिबे तो लोकस स्टैंडर्ड हैला कोन द एग्रीड पर्सन माने कोन जे विक्टिम जे निजे जदि विक्टिम निजे अप्लाई करछि देन सेटा कोन होला लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल दैट मींस कोन निजे जे विक्टिम से ही आसी की अप्लाई करि परिबो बट हेबियस कॉर्पस रे लोकस स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नो दैट मींस कोन जे विक्टिम तार रिलेटिव्स एंड तार नोन पर्सन दे आल्सो कैन अप्लाई हेबियस कॉर्पस ओके देन इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेयर डिटेंशन इज लॉफुल जदि आपन को डिटेंशन ता लॉफुल अछि दैट मींस कोन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ देन ए जो हेबियस कॉर्पस अछि सेटा आपनकर एप्लीकेबल हवानी डिटेंशन इज competent by court and detention is outside jurisdiction of the court मु कोन कहली जदि jurisdiction रो outside हबो according to supreme court रो जदि jurisdiction रो outside हबो that means someone is detaining you in suppose अमेरिका रे तो आपन को के जने डिटेंशन करूछंती देन हमरो एठी आसी कि आपन इंडिया रे हेबियस कॉर्पस को इशू करि परिबे नाही it should fall under the jurisdiction of our court that means इंडिया रे आपन को डिटेंशन हेतियो देन कोन करि परिबे आपण रिट इशू करि परिबे this is all about habeas corpus which is a very important writ then our next writ that is mandamus that mandamus means what it means we command what we command it is command mane kon jodi suppose one person there is one person who is not doing your work and although he is doing your work and it is not fruitful for you suppose gote bmc wala achi bmc officer achi ओके तो से कोन करछि आपण जाई कि ताको कोन कले कंप्लेन देले कि ए जगह रे ओलिया अछि एंड ए ओलिया टाको सफा करा जाउ नै एंड से तार काम करूनी से काम करनी माने कोन तार अथॉरिटी हला बा मैंडेमस हिसाब रे ताको कोन करि परियो से जाई कि तार अथॉरिटी अछि ना हेडा सफा करि परिबो किबा कोनोसी एप्लीकेशन देई परिबो फर्दर लोकन को से जाई ताको सफा करिवे किंतु से काम करूनी जदि से काम न करूची देन तम कोन करि परियो ताको एप्लीकेबल मनता विरुद्ध रे मैंडेमस जो रीट अछि से मैंडेमस रीट को इशू कर परियो अगेन एटा गोटे जिंस लागन कलो जदी पब्लिक ऑफिशियल्स कोन करछि वायलेट करछि तार माने अथॉरिटी को वायलेट करछि किबा से काम करूनी एवं काम करूछि भी जदी काम कले केमिति मैंडेमस आपण यूज कर परिबे देखंतु आपण एकी कंप्लेन देके आसले कि एठी ओलिया अछि एंड ए ओलियाटा मते प्रॉब्लम करछि से कोन गला से ओलियाटा आनी के आपण को दुआर मोरे पके दे पळेला बुझि बजो नै जे दुआर मोरे पके दे पळेला देन एटा तो आपण को आहुरी कष्ट होला तो सेति पय जदी से काम तार न करछि तथापि आपण को प्रॉब्लम होछि जदी काम करछि तथापि प्रॉब्लम होछि तो एटा वी हैव ए कमांड मैंडेमस मींस वी हैव ए कमांड एंड एटा ओनली कोन हबो ना पब्लिक ऑफिशियल्स को भाई एप्लीकेबल हबो बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिए इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द वायलेटर इज ए पब्लिक ऑफिशियल्स दैट मींस प्राइवेट कंपनी बा प्राइवेट ऑफिस रे के जदी काम न करछि आपण को यू कैन नॉट जस्ट इशू मैंडेमस रीट ओनली पब्लिक ऑफिशियल द गवर्नमेंट ऑफिशियल जे अछि से यदि आपण को काम न करछि देन यू कैन इशू मैंडेमस रीट्स here concept of locus standi applies that means the aggrieved person that means the person who is suffered the victim itself
सी जाके निजे एप्लिकेशन दवा पड़ो बा सी जाके निजे रिट को ये जो मैंडामस रिट अच्छी से रिट को इसी को पड़ो इट कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल बट प्राइवेट इंडिविजुअल व्हेन ए ड्यूटी इज नॉट मैंडेटरी जेतोले ड्यूटी मैंडेटरी नथिवो टू बी एनफोर्स्ड ए कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे अगेंस्ट प्रेसिडेंट गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन द जुडिशियल कैपेबिलिटी एई मानक विरुद्ध रे आपण मैंडेमस इशू करि परिबे नाही व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके देन prohibition what do you mean by prohibition it means to forbid means ko suppose you are an officer you are an officer in government sector and आपण को ऊपर किछि गोटे लागि छि चार्ज लागि छि कि आपण कोन लांच नै छथि किबा काहा को मिसबिहेव करि छथि तो सेही हिसाब रे आपण को कोन करा जिवो आपण को ऊपर गोटे केस चलला एंड केस चलला रे आपण को एमिति भी हे पारे आपण को सस्पेंड करा जाय परियो किबा आपण को ऊपर अलगा कोनोसी जेमति कि सपोज देयर इज अ वुमेन से कोन करछि हैरेसमेंट रो केस आपण ऊपर करछि कि देयर इज अ पर्सन हु इज सेइंग कि आपण तांगटर कोन ब्राइब मागी छथि तो से हिसाब रे कोन करा जिवो आपण को ऊपर गोटे केस चलिबो गोटे ट्रिब्यूनल रे गोटे केस चलिबो सो ट्रिब्यूनल हला कोन फर्स्ट देखि दंतु प्रोहिबिशन माने कोन इट इज इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लेटर एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन कहबे एटा माने कोन इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर judicial and quasi-judicial authority, not against administrative authorities, legal bodies and private individuals. Locus standi apply. That means कौन? देखो जिते बड़े the individual बाद locus standi applies माने कौन? ये जो read टाकू जी victim से निजे जाएगी feel करिवो. ता मीन आ माने हला कौन? जो victim अच्छी ताकू suppose job रू बाहर कराई ची. ओके एंड सी तार कहूँ कि ना ये जो एटा लीगल नुह माने मते जो जॉब रो बाहर करा जायछि एंड मो विरुद्ध जो सब जिंस गुडाक दिया जायछि माने सपोज देयर इज ए कहंदिनी कि कई जने देखि चंदी से जिंस को किबा जो जिंस गुडा फॉल्स एविडेंस गुडा प्रोवाइड करायछि ओके तो सी कोन करि परिबो तार फंडामेंटल राइट्स एटी वायलेशन हला तो सेति पई से प्रोहिबिशन रिट जोडा अछि सेटा को सी इशू करि परिबो एंड मन रखिबे ए जो प्रोहिबिशन रिट अछि ना एटा केबे इशू होबो ना जेतेबेले केस ता पेंडिंग थिबो ट्रिब्यूनल रे ओके पेंडिंग थिबो ट्रिब्यूनल रे ओके आ जदि केस रो माने केस रो सुनानी हे जायथिबो देन प्रोहिबिशन कैन नॉट बी अप्लाइड हियर बा प्रोहिबिशन रिट को हमें इशू कर परिया नाही ओनली पेंडिंग केस रे हमें कोन कर परिबा प्रोहिबिशन जो हमरो रिट अछि ताकू इशू कर परिया ओके सो से कौन गला से गला का पाखकू सुप्रीम कोर्ट पाखकू किबा हाई कोर्ट पाखकू कि रिट इशू गला देन रिट इशू गला को रिट ना प्रोहिबिशन रिट देन सुप्रीम कोर्ट पचारियो इशूड बाय हायर कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू प्रिवेंट द लेटर ऑफ एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन दैट मींस कौन से जो जुरिडिक्शन बा जो केस ऊपर कौन चलची तार मतदान अछि बा केस ऊपर सुनानी अछि ताकू सेठी रखिबा पई के करबो हमरो हाई कोर्ट अछि किबा सुप्रीम कोर्ट अछि सेदार ट्रिब्यूनल्स हला कोन गोटे जिंस मन रखंतु गोटे स्मॉल बॉडी जोडा के हम बनाई थे कोन भाई ना किछि किछि काम जदी हमरा एनजीटी अछि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड आंको पाखरे किछि किछि पावर थाए जो उठरे से माने कोन करि परिबे ना जुरिडिक्शन को प्रोवाइड करि परिबे माने जस्टिस प्रोवाइड करि परिबे किछि पावर थाए ओनली आंको पाखरे ओके ट्रिब्यूनल्स पाखरे तो हाई कोर्ट किबा लोअर कोर्ट से जो ट्रिब्यूनल्स थांती तांको कोन करिवो मना करिवो कि फर्दर प्रोसीड कर नाउ आ फर्दर प्रोसीड करानी ए जो केस चलती ताको सेठी रखिया को दिबो तो एटा हला हमरो प्रोहिबिशन रिट्स it is only applicable for judicial or quasi judicial authority not against the administrative authority बहुत important एटा मन रखिबे administrative authority विरुद्ध रही परिबनी legislative body विषय भी हे परिबनी private individuals विषय भी हे परिबो नाही okay and locus standi applies here that means the victim itself he has to or she has to file his writs okay then our next writ is certiorari means what suppose prohibition writs suppose गोटे लोक अछि ताको prohibition writs को फिल करिया रे लेट हे गेला तो से कोन करिवो फर्दर से certiorari को कोन करिवो अप्लाई करिवो दैट मींस को certiorari writs को से कोन करिवो एप्लीकेशन करि परिवो बा इशू करि परिवो कोन certiorari writs तो certiorari writs रे कोन होबो अगेन दो हाई कोर्ट जोटा अछि बा सुप्रीम कोर्ट जोटा अछि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को पचारिवो कि सर्टिफाइड
give me the certification on the basis of what तमे ए लोकटा को दोषी साब्यस्त करिच. So it means to be certified or to be informed कि मते इन्फॉर्म कराओ, मते से एविडेंस देखाओ कि को बेसिस रे आपण ए जो लोकटा को आपण कोन करछन्ती प्राइवेट जो इंडिविजुअल लोक को आपण सस्पेंड करछन्ती किबा कोनसी जो जस्टिस सुनैछन्ती तो को बेसिस रे सुनैछन्ती से जो सर्टिफिकेट मते देखंतु. It is issued by the higher court to the lower court or tribunals. To the lower court or tribunals. Okay, higher court रे आपण को कि आसला सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट रे ट्रिब्यूनल्स गुडा आसीबे किबा अलगा कोनसी लोअर कोर्ट को से माने एटा सर्शियरारी पठेबे कि आपण माने मते सर्टिफिकेट पठांतु कि को बेसिस रे आपण आगु ए जुरिडिक्शन सुनी छंती. लोकल स्टैंडर्ड अगेन हियर लोकल स्टैंडर्ड अप्लाई. दैट मींस लोकल स्टैंडर्ड माने को से जो इंडिविजुअल हु इज सफर्ड by this jurisdiction, he or she should apply this certiorari writ. Okay, not available for legislative bodies and private individuals. जेमिति हमरो कोन थिला prohibition writ रे एठी भी एई मानन को प्रति applicable एटा न. Then we have quo warranto. Okay, quo warranto means it is also a very important writ जोडा कि एग्जाम रे बार-बार हमको पचरा जाय कि quo warranto writ माने कोन. What is your authority? Okay, what is your authority? That means suppose there is a government office and जोटा को कि illegally कहीं जने capture करके बसछि. He or she has not any qualification to hold that office. Suppose जने गोटे ऑफिस अछि से ऑफिस सपोज देखंतु गोटे पुलिस स्टेशन अछि. पुलिस स्टेशन रो गोटे हमरो हेड अछंती. सपोज गोटे छोटो पुलिस स्टेशन अछि एसआई जोडा को हमें तार हेड अछि से पुलिस स्टेशन. बट से जो एसआई जी से 10th फेल. ओके, 10th फेल तो से 10th फेल हेले से बेसिस रे तो से तार अथॉरिटी नाही कि से जने एसआई हे परिबो. तार अथॉरिटी नाही कि से गवर्नमेंट ऑफिस रे बसी परिबो एंड को एग्जाम को क्वालिफाई करी कि से जगह रे बसी से जो गवर्नमेंट ऑफिस अछि ताकू होल्ड करिकि बसी. तो ए सब क्वेश्चन करिया पई आपण को वारंट जोटा अछि को वारंट रिट इशू करि परिबो कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस. ओके, को वारंट माने हला सेटा. देन लोकल स्टैंडर्ड अप्लाइज. लोकल स्टैंडर्ड अप्लाइज मींस को इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल हु हैव any problem with that authority, then he can only applies the writs. Okay, and again it is only for public office. Public office माने को suppose private office रे केही जने CEO हे गला, हमें ताको क्वेश्चन करि परियानी कि on the basis of what you became the CEO of this company. We can never question that individual. But in public offices, government offices रे जदी जने केही जने अख्तियार करके बसि, then you can obviously question him or her that what is your authority, by what authority you just hold this position. So this is all about quo warranto and this is all about our 5 types of writs. I hope you are clear right now कि आपण मानको बहुत तरह clarification मिल जाइथिबो कि writs माने कोन, and further examination मध्ये आसिले it will be very helpful for you. Thank you for watching this video and do subscribe to our channel.